अस्सलामुअलैकुम। MGT610 बिज़नेस एथिक्स का हमने पढ़ना है लेसन नंबर 36, जिसका नाम है दी ड्यू केयर थ्योरी। जाएंगे हम अपनी वर्ल्ड की फ़ाइल पे और यहाँ से जो है देखेंगे। फर्स्ट है ड्यू केयर थ्योरी बेसिक्स। ड्यू केयर थ्योरी के मुताबिक कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर इक्वल नहीं होते। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ज़्यादा नॉलेजेबल और स्किल्ड होता है और कंज्यूमर का इंटरेस्ट वल्नरेबल होता है। इसलिए मैन्युफैक्चरर का ड्यूटी है कि वो स्पेशल केयर ले और इंश्योर करे कि कंज्यूमर को हार्म ना हो। ठीक है, ये डॉक्टराइन बेसिकली कहता है यानी कि कैविएट इम्प्टर बायर बिवेयर काम नहीं करता, अब कैविएट वेंडर सेलर टेक केयर है। ठीक है, मैन्युफैक्चर ड्यूटीज़ ड्यू केयर यानी कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन, मटेरियल, प्रोडक्शन और इंस्ट्रक्शन सेफ होना चाहिए। मैन्युफैक्चर को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो रीज़नेबली प्रिवेंट कर सकें पॉसिबल हार्म। अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट को मिस यूज़ करे या हार्म जो मैन्युफैक्चर ने फोर्सी नहीं किया तो मैन्युफैक्चर मॉरली निगलिजेंट नहीं है। एरियाज ऑफ ड्यू केयर यानी कि डिज़ाइन, प्रोडक्ट का डिज़ाइन सेफ और डेंजर्स कंसील ना करे, सेफ्टी डिवाइसेस इंक्लूडेड हो और मटेरियल एडिक्वेट हो। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल्ड हो, डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई हो, अनसेफ शॉर्टकट्स ना लिए जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है इन्फॉर्मेशन। लेबल्स, वार्निंग्स, इंस्ट्रक्शन प्रॉपर हो जो पोटेंशियल डेंजर्स एक्सप्लेन करें। कंज्यूमर कैपेसिटीज़, मैन्युफैक्चरर को सोचना चाहिए कि कंज्यूमर का नॉलेज लेवल क्या है। अगर प्रोडक्ट का मिसयूज़ या हार्म सीरियस है और कंज्यूमर समझ नहीं सकता तो प्रोडक्ट सेल केयरफुली कंट्रोल करना चाहिए। प्रॉब्लम्स विद ड्यू केयर, नो क्लियर रूल, कब तक मैन्युफैक्चरर नो केयर ले रहा है, इसका एग्जैक्ट मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास आगे, रिस्क फॉर साइड, मैन्युफैक्चरर एज्यूम करता है कि वो सब रिस्क फोर्सी कर सकता है पहले। पैटर्नलिज्म यानी कि ये थ्योरी थोड़ी पैटर्निस्टिक लगती है क्योंकि मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि कंज्यूमर को कितना रिस्क बियर करना चाहिए। नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज हैं। व्हाट डज द ड्यू के थ्योरी एज्यूम अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स? Consumers and manufacturers do not meet as equals. Manufacturers are more knowledgeable and skilled. What doctrine replaces caveat emptor in the due care theory? Caveat vendor let the seller take care. According to due care theory, what is the manufacturer's duty regarding product safety? To take special care to prevent harm to consumers. What areas must manufacturers consider to exercise due care? Design, production, and information. Give one example of due care in product design and including safety design devices, using adequate materials and not concealing dangers. Give one example of a due care in production, controlling the manufacturing process to eliminate defects and ensure safety. Give one example of due care in providing information, providing proper labels, warnings, and instructions about potential dangers. When is a manufacturer not morally negligent even if a consumer is harmed? When the harm could not have been reasonably foreseen or prevented. What must manufacturers try to anticipate according to due care theory? Possible misuse of the product by consumers. Why must manufacturers consider the capacities of consumers? Because consumers may not understand serious risk without expert guidance. What is one major difficulty with the due care theory? There is no clear method to determine how much care is enough. What is another problem with the due care theory regarding risk? It assumes manufacturers can foresee all possible risks before sale. Why is due care theory considered pessimistic by some critics? Because it assumes manufacturers should decide for consumers the proper level of risk to bear. How does due care theory differ from contract theory regarding consumer equality? Due care assumes manufacturers are in stronger, more knowledgeable position than consumers. What is the consumer's right under the due care theory? The right to rely on the manufacturer's expertise and expect products to be safe. तो यहाँ तक हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 36 जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।